Hi, I'm Bhawana Somaaya, doing this conversation with four beautiful girls on Netflix. On my left is Mrunal Thakur. Beside her is Taapsee Pannu. In the center is Neena Gupta and Amruta Subhash. You know, every year on 8 March, I am surrounded by women in cinema, and we are always discussing the evolution of women in entertainment. And I just ask myself the same question every year. Do we really need a Women's Day? What do you think, Amruta Subhash? Yeah, well said. Exactly. Every day is a Women's Day now because the way things are changing, at least I'll talk from our field, I think things are changing. And earlier, like, you know, I've said it earlier also, earlier content was the king, but now content is becoming queen too. So I think there is much to celebrate every day. Mrunal, do you think we need a Women's Day? The men don't have it. All days. 4 days. I think for me, every day is, Women's Day. I celebrate myself, the fact that I'm here today. I'm grateful to God and to all the people who are around me to make me a better person and a better actor. And I think people and women out there especially, they just need to, I just want to tell them one thing through this interview. Just own up, just love yourself. वो कहा है ना गीत ने जब भी met में कि मैं अपनी favorite हूँ गीत ने नहीं गीता में लिखा है लिखा होगा yeah, so I am my favorite, like I love myself and मैं खुद की favorite हूँ. So if you keep that in your mind, every day is Women's Day for you. नीना, आप तो खुद की फेवरेट है, वो तो दिख ही रहा है रोज इंस्टाग्राम पर. पर मैं बिल्कुल किसी भी डे में विश्वास नहीं करती. अच्छी बात. चाहे फादर्स मदर, ये तो एक बिजनेस का काम, ये बिजनेस अच्छा हो जाता है ना. विमेन डे में काफ़ी चीज़ें बिक जाती हैं, वैलेंटाइन में बिक जाती हैं, खूब मज़ा आता है. वरना ये मतलब वैसे औरतों को रेप करो और वैसे विमेन डे मनाओ, ये बकवास है. पर ठीक है, इसमें कुछ, इसको मानने में मेरा कुछ हार्म नहीं होता. So I'm okay. If you are happy doing Women's Day, I will also say Happy Women's Day. ये नहीं है कि भाई मेरे को उससे कोई नफरत है या कुछ है. बट उसमें कुछ हिंदी में बोलते हैं कुछ तंत नहीं है. Taapsee, everybody has given varied answers. So many women, different reactions. Yeah, but I might slightly differ here. I'll tell you, जैसे हम बर्थडे बनाते हैं अपना, ऐसा तो नहीं है कि हम हर रोज अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करते, पर अपना जन्मदिवस बनाते हैं, एनिवर्सरी बनाते हैं. ऐसे काफ़ी ऐसे बेंचमार्क डेट्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में मनाते हैं. मैं विमेंस डे को ये नहीं सोच के मनाती कि आज सेलिब्रेट करते हैं विमेनहुड, उस वजह से नहीं. आई थिंक ये ऐसा दिन है वेयर आई फील एट द एंड ऑफ द ईयर और आफ्टर 1 ईयर मुझे असेस करना है कि मैंने क्या किया टू गेट टू एन इक्वल सोसाइटी. What I feel is true feminism, according to me, is an equal society to get to that. तो ये डे it helps me introspect, assess कि ये लास्ट 1 साल में क्या किया और अगले साल के लिए क्या कर सकते हैं, और बाकियों को एक्नॉलेज करना कि अच्छा हाँ, मतलब लेट मी जस्ट ना, पूरा साल तो हम यही देखते रहते हैं ना कि हमने क्या किया, क्या हमने अचीव किया, क्या कर सकते हैं. अच्छा इस दिन और जो लोग हैं जिन्होंने किया होगा अपनी लाइफ में कुछ काम, उनको एक्नॉलेज करना या उनका सोचना कि अच्छा इन्होंने भी ये किया. सो हम कितना दूर आए हैं पिछले साल से लेके इस साल तक. मैं जब तक इक्वल नहीं हो जाती ना सोसाइटी, You use it as a barometer. या जब तक इक्वल, जिस दिन इक्वल हो जाएगी ना हमारी सोसाइटी, आई डोंट थिंक वी विल नीड टू सेलिब्रेट और हैव दिस काइंड ऑफ एन असेसमेंट डे एक्चुअली. तो अभी So I would just like to quickly recap, in the olden days, when movies were made, they were mostly mythologicals and historicals, and women were center stage. So were men. Then we had the narrative that changed slowly to social dramas. And again, women were in the center, but so were men. Sometimes women were on the fringes also. Somewhere when color came and glamour came, the filmmaker became greedy and thought that the heroine should be more of a foil to the hero. And then she became a foil, so she was just singing songs, running around the trees and shedding a few tears. But nothing lasts forever. And so the art cinema, the parallel cinema, the middle of the road cinema came, and they gave 50 shades of the heroine. Then some more years and decades went by, and we have
What the point I'm making is that every time the woman was being projected, they always said, the detractors and the critics, that the alternate platform was making them more realistic. In the beginning, the theater. After that, the small screen, where the heroine and the vamp, rather the vamp more than the heroine, was more attractive, more relatable. And in the last few years, the OTT platform has come. On the OTT platform, particularly Netflix, has defined the millennium woman. You know, she's empowered, she makes her choices, she's not always strong. She fumbles, she stumbles, she juggles, but she's unafraid to explore her life. So Neena, you have been through all these alternative platforms. You've been on the stage, you've been on the small screen, you've been on mainstream, and you have been now on OTT platform. Has the woman really changed, or is it the same in new packaging, or थोड़ी बदली है, थोड़ी नहीं बदली है? क्या है? किस्सा क्या है? जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि समाज में बदलाव आया है, क्योंकि औरतें कमाने लगी हैं. सिर्फ यही रीज़न है. जैसे औरत ने कमाना शुरू किया, वो दे वोंट टेक एनी शिट फ्रॉम द मैन हाउ दे यूज्ड टू टेक, बिकॉज तब वो क्या करे. समाज बदला, औरतों ने कमाना शुरू किया, और वो उन्होंने काम करना शुरू किया. पर ये जो मैं बोल रही हूँ, ये 0.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, विमेन पॉपुलेशन के बारे में बोल रही हूँ. पर फिर भी मैं इतनी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहती कि ये ऑप्टिमिज्म है कि चलो उतना तो बदला. हाँ, उसकी वजह से सब कुछ बदल रहा है. उसकी वजह से हमारे कंटेंट बदल रहा है. उसकी वजह से मुझ जैसे को रोल्स मिल रहे हैं. आज मेरी उम्र वालों को अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, सिर्फ माँ एज इन माँ नहीं मिल रहा. सो बदलाव आया है, थोड़ा सा आया है, पर आया है. So Mrunal, what Neena feels is that it's the economic independence that's changing. What does somebody from your generation feel? Are you aware of what the woman was on screen in the olden days, then, you know, in the nearing decades? Did your parents talk to you about it? Thank you, ma'am, for asking that question. I was really hoping to, have some really interesting questions out here. So I feel the audience have changed. They've become alert. And they want to see one thing, not just great content, but relatability. They want to see, whenever they're watching a character, they want to sit in that seat, be it at home or in the theaters, and they want to feel like, yes, that's my journey. And what had happened so far was, because we were following that formula, कि हीरोइन ऐसी ही दिखनी चाहिए, या बेचारी, या डांस कर रही है, या प्रॉप है, या सुंदर लग रही है. Right now, women out there, they're stepping out. We need to celebrate women, and it's not, everyone has their journey. So I think through this film, I'm so glad that biopic started. At least biopic के through वो एक बदलाव जो एक, जो शुरुआत थी, वो हुई. डर्टी पिक्चर से. और किसने सोचा था कि डर्टी पिक्चर में विद्या बालन जी उस वेट के साथ अनअपोलोजेटिकली जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है. सो थिंग्स आर चेंजिंग. द वे ऑडियंस डू नॉट लुक एट हीरोइन एज हीरोइन, दे लुक एट हीरोइन एज एन आर्टिस्ट, अ परफॉर्मर. सो टुडे I'm really happy to be entering Bollywood in this phase, because I have no idea what I would have done back then. I don't know if I would have survived or not. I feel like today I'm balancing both commercial cinema and art films. I started with Love Sonia, and if you see Super 30 or be it Josie, which is going to release now, the kind of characters I have played are relatable. And that's one thing that's changed. The audience has become aware. Why suddenly Netflix came and people started binge watching shows? Because we could see relatable characters. We could see stories. It was not just dancing around, but ऐसे मुद्दे थे जो हर घर में मौजूद, हर घर में. It's a slice of life, which was missing. So I think this is what has changed for me. So Taapsee, do you think it's the identification is what Mrunal is talking about? That, it's all about identification. Do you think that is the key? See, I largely look at our film industry as business. This is business. So when women got the right to earn, or they could earn, वो जो insecurity होती है ना कि क्या होगा अगर ये try किया तो,
अगर इस तरह की फिल्में करी तो, या मतलब ये रूट चूज किया लाइफ में तो वो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट नीना मैम वाज टॉकिंग अबाउट गिव्स यू दैट सिक्योरिटी that now you can earn, and you can earn because you are doing it with your talent, sheer talent, and तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो विदाउट वेट करे कि कोई तुम्हें संभाले. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, वो आपको आगे का एक रिस्की एरिया में स्टेप रखने में कॉन्फिडेंस देती है, जिसकी वजह से वो स्लोली वो कदम बढ़ते गए, बी इट फ्रॉम थिएटर टू पैरेलल सिनेमा टू नाउ OTT, एंड ऑल्सो सम रियली, आई मीन I have actually worked in mainstream films in which I felt that they had the courage to sketch out female characters which are not conventional mainstream characters, and they were accepted because someone had the courage to step there कि नहीं ठीक है, इससे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी फिल्में बंद हो जाएंगी ये फिल्म अगर नहीं चली तो, या अगर ये फिल्म नहीं चली तो मेरे को एज एन एक्टर आगे काम नहीं मिलेगा, या पता नहीं मेरा लाइफ का क्या होगा. All these things came with financial security that no, there is, I can earn my bread and butter through this. That definitely helped, and today everybody is a star in their own lives. ठीक है? Absolutely. Because of social media, it's no more like कि अच्छा वो आप देखो रील्स आज एक्टर्स भी बना रहे हैं और हर कोई दूसरा भी इन्फ्लुएंसर से लेके any regular person is making reels. So we have the same platform. So everybody is a star in their own lives now. So they feel like कि अरे मतलब मेरी भी तो स्टोरी है, मैं मतलब जिससे मैं रिलेट करता हूँ या करती हूँ वो भी हीरो हो सकता है ना पिक्चर के अंदर. तो दैट रिलेटेबिलिटी ऑल्सो हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ एक्टर्स लाइक अस टू बिकम द प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज वो हीरोइन एस्पिरेशनल नहीं रह गई है सिर्फ. Absolutely. We'll come to specific roles later. You know, Amrita, what is attractive about you is that you are probably at the moment the only Marathi actor who has really splashed across all platforms. And you did it very quietly. You know, when you made it, were you feeling that something big is around the corner, or you were just doing it intuitively? I was doing it intuitively, but I had this चाहत, this longing कि after certain age, थोड़ा सा डर लगता था कि मैं कैसे रोल्स करने वाली हूँ बाद में, because I have been always waiting for good roles only, good content only, and then I was like, तब इंडस्ट्री में जैसे आपने भी कहा कि औरतों को एक एज के बाद जो लिमिटेड चॉइसेस मिल रहे थे, तो मुझे लगता था कि मैं जब वहाँ पहुँचूंगी तो क्या होने वाला है. एट दैट टाइम आई रियली डिडंट नो दैट OTT वुड हैपन टू इंडिया. And then, it's such a pleasant, and for me, at least now I've done so many projects on Netflix, and so many, like, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता नहीं. Every किरदार is different from, and that has been my dream always. Like, I don't want to repeat myself. I want to be different. I don't want to get slotted. क्योंकि कई बार वो होता है कि अरे सीधी सादी अच्छी सी लड़की, मतलब that is also good. I have done those roles also. But after that, doing a dhamaka where she's a, whatever she is, like, exactly. So being able to portray that mind or live that mind is so exciting, and for an actress like me it's always been content, matlab. No, not just the negative roles. You also played the kind of a, in gender you are making an expression. You are talking about your choices in that film which I saw. Booth. Yeah. The Booth, oh, thank you so much for mentioning that, because I'm really, because it's a short film, and I'm really proud of all these filmmakers who are trying to, express and tell their stories, unique stories through short films. Sometimes ऐसे नहीं होता है कि आपके पास उस तरह का ये नहीं, but still they want to do it. And this story, Neena ji, is about एक जो security guard हमें check कर रही है, and उसके aspirations, वो एक लड़की को प्यार करती है, and then it's such a beautifully portrayed, and it's the monotonous life that she's leading, and एक boredom से कैसे वो पूरा कैरेक्टर पोर्ट्रे करती है. नीना, Exactly. आपके बारे में मैंने तो आपके करियर को बिगनिंग से देखा है. नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगी. तो आपके करियर को हम दोनों ने एक दूसरे की जवानी देखी है. तो बहुत चर्चा होती थी आपकी खूबसूरती की और आपके स्पंक की. And you've done films like Mandi, and then you have done other films also. And then at a stage you felt that nothing was going to happen, and then you became a milestone for everybody your age group because you did बधाई हो. अब मैं एहसास मानती हूँ कि बधाई हो के बाद सारे फिल्म मेकर्स डर गए होंगे कि अभी नीना गुप्ता के पास अच्छा रोल नहीं है तो मत जाओ.
तो ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ, ऐसा हो रहा है। मेरे मैनेजर कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मत जाओ तो कई बार तो एक्चुअली कोई इतना बुरा रोल लेके आता था ना, तो इतना तकलीफ होती थी कि ही थिंक्स कि आई एम वर्थ दैट, ही और शी, ऐसा भी जमाना सेल्फ था। एस्टीम, they destroy तो your सेल्फ एस्टीम self-esteem. तो रही नहीं मेरी, तो सदियों पहले इवन विद इन आर्ट फिल्म्स एट दैट टाइम व्हेन आई वाज देयर, हम आए थे, हम सोच रहे थे आर्ट फिल्म में ही हमें चांस मिलेगा, सुभाष गई तो हमें मिलते भी नहीं थे। वो लोग भी 3 लोगों को देते थे, शबाना, स्मिता और जो थोड़े गरीब थे वो दीप्ति। उसमें भी हमने साइड रोल किए, हमें मेन रोल तभी भी नहीं मिला, चाहे हम उनसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड हो या ना हो, इसका कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बिजनेस तभी भी वही था, चाहे वो आर्ट फिल्म हो चाहे ये हो। They are far luckier. हाँ, They have got far more opportunities. Yeah. And they have got far more platforms to express it. Yeah. And they don't carry any baggage. We carried a lot of baggage. या पर फिर भी अभी एक बात बड़ी अच्छी हुई है, एक तो मैं काफ़ी ना कहने लगी हूँ। ना तो पहले करते नहीं थे क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत थी, तो मैंने वो लिखा है ना भिखारी वाला रोल का, मुझे कैसे गालियाँ पड़ी थी। तो मैं एक फिल्म में मुझे शक्ति कपूर वॉज अ भिखारी का हेड, और मैं उसके पीछे जो उसके चेले होते थे ना, उसमें एक भिखारिन थी। हाँ तो तो उसमें मेरे को जब बोला गया था, तो काम चाहिए था, काम पैसे चाहिए थे ना जीने के लिए, तो मैं उसमें भिखारन पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके चलती थी। तो उसमें मेरे 3-4 डायलॉग थे, तो एक सीन हो रहा था जिसमें मेरे डायलॉग था, तो डेविड ने मेरा डायलॉग काट दिया है, कोई मेरा डायलॉग नहीं था। तो मेरे को ना बहुत धक्का पहुंचा कि मतलब एक तो डायलॉग 2-3 थे, वो भी काट दिया। तो मैं बड़े ऐसे करके के पास गई, मैंने कहा यार मेरा एक डायलॉग था यार, बोलने दे ना, काट दिया तूने। ही वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम विद द बिग स्टार्स, उसमें जूही थी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, सब लोग थे। उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी सबके सामने। You? माँ बहन की। He abused you? Yeah. On the sets in front of On the everyone? set in front of everybody. And I couldn't believe it. Then जूही मुझे लेके अपने कमरे में गई, and she told me कि don't worry, ये सब औरतों के साथ होता है, कोई बात नहीं, he must be having some problems. He was having some problems with the actors, काम खत्म करना था जल्दी, blah blah blah. But वो किया ना भिखारी, और भिखारी में भी मतलब मेन भिखारी नहीं, मतलब एक टुच्ची वो, तो वो सब किया हमने। पर उसके बाद आज मेरे को अच्छा लगता है, मैं ना कह रही हूँ। और एक और बात बड़ी अच्छी लग रही है कि एक प्रोड्यूसर ने कहा अगर नीना करेगी तो हम ये फिल्म करेंगे। दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, दिस आई कुड नॉट इमेजिन कि द प्रोड्यूसर इज सेइंग, मेरे को आंख में आंसू आ रहे हैं बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग दिस, सो दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। What a wonderful story and what a wonderful interpretation. But I am looking at different things, Taapsee. When she says that Juhi took her in the room and said that don't worry, it happens with everybody. I'm surprised. Does it happen? Did it ever happen something like that with you? No. Where you not- were humiliated in public? Because it's all right to celebrate womanhood, but it's also time now we open our hearts and share about when we were low and when somebody was not sensitive to us. Not this extreme, and I don't even know how I would have been able to handle it if I would have gone. She's through made of this. steel. Yeah, that's what. Like, No, you have to survive. It's a survival thing. I didn't want to take money from my parents, so I have to survive, and I did not compromise. I could have slept with people and earned money. A lot of women were doing that. माइक में बोलेंगे आप? मैं भूल जाती हूँ, इतना वो एक्साइटमेंट हो जाता है। जी। So, yeah, you had to survive, I'm saying. So you had to do, instead of compromising on other things, I would rather take this shit and do a bikarin in a gang than go and sleep with somebody to get work. At my time, you had to do it. People, you had to do it. A lot of people. It was a very, even TV, you had to sometimes do it. भावना जी, आई एम सो टच्ड एंड नाउ एज यू सेड, हम जब कह रहे हैं कि हम बेहतर टाइम्स में हैं, इसका मतलब मुझे अभी समझ में आया कि बेहतर टाइम्स का मतलब क्या है। कि सपोज ऑफ कोर्स मैं भी
अगर हमें किसी के साथ ये नहीं करना है, बाकी चीज़ों से अगर रोल नहीं मांगना है, हमें अगर टैलेंट के ऊपर ही चाहिए, तो अगर ये सब हमें नहीं, क्योंकि एज यू आर सेइंग वी आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटीज, एंड अगर ये ऐसा कर रहा है तो मैं उसको बोल के यहाँ जा सकती हूँ, आई एम लाइक नो, आई एम नॉट डूइंग इट. सो वी कैन अफोर्ड टू पुट अवर फुट डाउन, बट जब ये वक्त नहीं था तब. नहीं तो अब तो डायरेक्टर्स व प्रोड्यूसर्स भी बहुत अलग प्रकार के हैं ना. दे आर वेरी बहुत सम्मान करते हैं, दे आर वेरी डिसेंट, दे आर एजुकेटेड. वो एटीट्यूड नहीं है कि नाच टाइप. हाँ. And just on record, I would like to say that it happened with Neena, it happened with some other people, but it does not mean that it happened with everybody. You know, a lot of people were without scars. They went through a successful career, particularly if you are surrounded by your family who are accompanying you on the sets. There were a lot of hierarchy, of course. Yes, both of you have to have your Suddenly, expression. I just feel like all the problems that I had in my life are so petite in front of what she just mentioned. But having said that, trust me, there are few occasions where things that I've encountered on set where there was a scene which was happened to be a romantic scene, and I wanted like narration, my director to tell me what it is all about. He said, "Karenge, karenge." They were waiting for the hero to come, and I'm just waiting there. Ki, sir, do I really have to, like, look, I'm doing my work. It's roll, camera, action, cut. But I need to know what I'm doing. And if you do not tell me that, I have a problem. And me being a girl, if I'm asking him constantly, they would just look at me as if I've done some pap. I said, sir, I need to know. The hero comes, walks in, and he says, sir, I can't do it because for whatsoever reasons. Like, I'm married and I don't want to do it. And I just felt like so humiliated that if hero would have agreed, then ye you to have to ho do it. jata. Hanji. You know, and this is still happening. That's why hats off to recently there's a film that released and they had an intimacy coach. So all these things, I wish we are introduced to all these concepts. You are getting far more facilitated. Yes. It is far more clinical. It is far more choreographed. Yeah. Business. So, but I'm happy that I'll be comfortable tomorrow. At least when I go on set, someone asks me that, are you comfortable doing that? Yeah. Taapsee, what is your take? Because after this, there will be one quick round fire and then they are giving me isharas. No, I'll tell you just these. So luckily, we are in this era, and otherwise, मेरे को तो नहीं पता if I would have even went back to work after that. So, but nor this kind of an incident has happened. What has happened is, जैसे एक picture हाँ करी थी in the beginning of my career, because of अच्छा ये 2-3 सीन अच्छे लग गए इस कैरेक्टर के, ये करते हैं. सेट पे गई, पता चला कि नहीं चेंज हो गया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन सीन ही चेंज हो गया. मैंने कहा क्यों चेंज हो गया? तो नहीं, हमें लगता है कि हीरो को भी होना चाहिए इस सीन के अंदर. मैंने कहा बट ऐसा तो नहीं नरेशन में था. नहीं, बट अब ऐसा ही है क्योंकि हीरो सर फील्स कि ऐसे होना चाहिए. तो देन सडनली आई एम लाइक ओके, एटलीस्ट पूछना दूर की बात है, बता तो दो. बताया भी नहीं. वो जब करने लगे थे सीन तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे बोला, तो मुझे पता चला कि ऐसे होगा. डबिंग करने गए पिक्चर के लिए तो बोलते हैं कि अच्छा ये ना आई हैड टू नॉट अब्यूज बट मतलब गुस्से से कुछ बोल के निकलना था हीरो के सामने से. वो क्लोजअप शॉट है मेरा, मैं अपनी डबिंग कर रही हूँ एंड वो कहते हैं कि नहीं ये ना चेंज कर दो ये डायलॉग, आप इसको ऐसे गुस्से से नहीं, आप ऐसा कुछ वॉट एवर बोल के चले जाओ. गो टू हेल बोलना था, गो टू हेल मत बोलो, वॉट एवर बोल के चले जाओ. मैंने कहा बट मेरा क्लोजअप है, कैसे दिखेगा? नहीं, हीरो सर ने बोला है आप उनको गो टू हेल नहीं बोल सकते ऐसे. Oh my God. तो मैंने कहा मेरा क्लोजअप उस टाइम, और ये शॉट मैंने हीरो सर के सामने दिया है खड़े होके जब रिकॉर्ड हुआ है. उस टाइम नहीं बोला आपने जब आपको कंफर्टेबल नहीं था. इस तरह की चीजें. एक हीरो की पिक्चर फ्लॉप हो गई और मेरे नेक्स्ट उनकी मूवी मेरे साथ थी एंड हमेशा बजट जो है पिक्चर का वो हीरो के हिसाब से सेट होता है, कितना बड़ा हीरो है, राइट. तो अच्छा अब उसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, तो अब ये प्रोड्यूसर मेरे पास आते हैं, आप अपनी सैलरी कम कर लो क्योंकि हीरो की पिछली पिक्चर फ्लॉप हो गई है, तो हमारे को अपने पिक्चर का बजट गिराना है, तो मतलब यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सैलरी. मतलब आप मानोगे सपोर्टिंग कास्ट वगैरह, कॉमेडियंस एंड सब कुछ फिक्स होने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से डिसाइड होता था कि अच्छा अब इस बजट में और इस डेट्स पे कौन सी हीरोइन आ जाएगी, उसको ले लेते हैं. तो एंड दिस यूज्ड टू बी अ वेरी, इट इज नॉट अ हश हश कॉन्वर्सेशन
कि Open conversation. इट्स अ वेरी ओपन कॉन्वर्जेशन कि ऐसे ही है. तो ऐसे देख के तुम्हें लगता है कि यार मतलब तुम तो लिटरली डोरमैट वाला ही हाल है. मतलब आज अभी फ्रेश हो तो है, 4-5 साल बाद वोन आउट हो जाओगे तो तुम्हारे को निकाल देंगे. तो दैट डे आई वाज लाइक दे नीड्स टू कम अ डे जिस टाइम कोई मुझे इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाए. तो दीज जो घाव होते हैं ना, वो जब हील होते हैं तो इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, आई फील. So now this is going to be a very quick rapid fire round and you all have to give very short answers. Your favorite role, only one. Everybody will say only one favorite role. Love Sonia, Sonia. Taapsee. I have a problem Okay. with this, yeah. I am giving your favorite role, Thappad. Okay. Neena. Badayo. Lily. Do you think woman is superior to man? We are different. Do you think Netflix women are different than other women? Characters are different. Do you think Netflix पे बहुत ज़्यादा गालियाँ होती है? सब OTT प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं. और बताओ, आपको कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार हो? मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया. Do you think Mrunal Thakur is going to survive and do big? I think Mrunal Thakur is going to last longer. लंबी रेस की घोड़ी है और मरते दम तक एक्टिंग करेगी. अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गई थी कि मैंने इतना आंसू भी टपकाए, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना सब होने के बाद भी मैं बिटर नहीं हुई. That we can see and that's the best. नो, बिटर होने से आप अपने को हार्म करते हैं. आपके साथ अन्याय हुआ तो बिटर हो जाते हैं, अपने को हार्म करते हैं. मैंने वो नहीं होने दिया, शायद इस वजह से मैं अभी तक सरवाइव कर रही हूँ, लेग्स दिखा पा रही हूँ. जो Don't become bitter, be better. हाँ, that's a good one. Amruta, you can have the last word. Yeah. But मैं एकदम इम्प्रेस हो गई हूँ इनसे. तो नहीं, लास्ट वर्ड मैंने अभी कहा था नीना जी से, मैंने क्या सीखा यही है. इन्होंने अच्छे लफ्ज में कहा कि बिटर नहीं होना है. Yeah. I think you need to remember why you started. That'll take you a long way. I think I will end it that it's wonderful to be a woman. It's wonderful to celebrate the Women's Day. It's wonderful to watch women characters complex or victimized or avenging on the screen, small or big. And it's wonderful to have chatted with all of you. Thank you, Bhavana. Pleasure.